كسر مبوال زنتك داغينا داغينا Okay, before we begin our new lecture on the design of reinforced concrete columns, if you have any questions in the previous lecture, you can ask your questions, please. Any question? Okay, if there are no questions, then let's start today's lecture on the design of reinforced concrete columns. This presentation has been organized in such a manner that a general introduction to the topic has been given in the beginning, and the remaining portion has been divided into two parts. In part one, the design of concentrically loaded columns, whose design is relatively easier. And in part two, the design of eccentrically loaded columns has been discussed, whose design is relatively difficult. Okay, so there are general introduction, and then design of RC columns in part one, design of RC columns in part two will be discussed in the next. Are two eccentrically loaded columns with mechanics interaction diagram, use of design aids, examples, and development of interaction diagram, and so on. Objectives of the lecture are that students will be able to explain the importance of longitudinal lateral reinforcement in RC columns, develop interaction diagrams for rectangular RC columns, and design uniaxially eccentric loaded RC columns. You know that columns are defined as members that carry loads chiefly in compression and are therefore referred to as compression members. ठीक है ना, columns तो आप लोग समझते हैं vertical members होते हैं, vertical members in the reinforced concrete structures, they are called as columns. क्योंकि ज़्यादातर उन पर लोड compression में होता है तो इसलिए इसको compression members भी कहते हैं. However, columns would generally carry bending moments as well about one or both axes of the cross section. The bending action may produce tensile forces or part of the cross section. Vertical member जब उस पर बिल्कुल concentrical loaded balanced load हो तो उसके ऊपर सारे का सारा लोड उसके सेंट्रॉइड में से गुजर जाएगा, ठीक है, with no unbalanced load. लेकिन अगर unbalanced load हो तो unbalanced load की वजह से bending moment आ जाएगा. The axial load will be है, but axial load will be coupled with bending moment. अब उसमें एक एक्सिस ये है कि अगर उसकी ज्योमेट्रिक एक्सिस आप एक को x y कहें, दूसरे को y कहें, और सिर्फ एक डायरेक्शन में अनबैलेंस लोड हो तो एक डायरेक्शन पे मोमेंट आएगा. लेकिन अगर दोनों डायरेक्शन में, जैसे कि कैंटिलीवर है, कैंटिलीवर इस तरह से भी निकला है और ऐसे भी निकला हुआ है, तो ये बेंडिंग मोमेंट अबाउट x एक्सिस भी होगा, अबाउट y एक्सिस भी होगा. जब इसमें सिर्फ एक एक्सिस पर बेंडिंग मोमेंट होगा, इसको यू एक्सियल बेंडिंग, और अगर दोनों एक्सिस पर होगा तो उसको y एक्सियल बेंडिंग. दोनों का डिजाइन डिफरेंट, ठीक है जी. इसमें बुनियादी जो कंसेप्ट है, तो एक्सियल लोड अगर हो, यानी एक कॉलम है जिसके ऊपर बिल्कुल एक पेड़ आपने बनाया हुआ है और पेड़ हाफ कैंटिलीवर इधर है, हाफ कैंटिलीवर इधर है, हाफ इधर है, हाफ इधर, तो इसे परफेक्टली कंसेंट्रिकली लोडेड है. लेकिन अगर एक साइड पे आप कोई रेत की बोरियां वगैरह कुछ रख दें तो इट विल प्रोड्यूस सम एक्सेंट्रिसिटी या बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस कर देगा, अनबैलेंस्ड बेंडिंग मोमेंट. इस तरह फ्रेम स्ट्रक्चर में भी जो कॉलम्स होते हैं तो आमतौर पे जो सेंटर ऑफ द बिल्डिंग कॉलम्स होते हैं वो आमतौर पे concentrically loaded columns के तौर पे consider किया. Although there will be some bending moments because of the live load disturbance. क्योंकि dead load can be perfectly balanced, but live load cannot be perfectly balanced. It is quite possible that one part or one room of the building is loaded and the other is unloaded. So the loaded part of the live load will produce some unbalanced bending moments and thereby making the column as uniaxial or biaxial columns. But generally speaking, the centrally loaded columns can be considered as concentrically loaded columns in a building. Okay, and live load will produce some unbalanced bending moments. And then in edge column, not a corner column. An edge column are the columns at the end of the building. For example, this is a hall, so all the columns on this edge will be called as edge columns. This will be called as corner column. This is a corner column, this is an edge column, edge column, edge column, edge column. And there will be centrally loaded columns like here. So these are central loaded columns,
These are edge columns and these are corner columns. Let's say there is no live load on the roof. There is no live load on the roof. Then these centrally loaded, symmetrically loaded central columns can be considered as concentrically loaded columns with no bending moments. Although, for practical reasons, we never design our column as concentrically loaded column because there will be always some live load. However, this bending moment will be less than the edge column, because the edge column is fairly unbalanced due to dead load as well as due to live load. There is no balance on this side. There is no load on the other side of the column. So when the load is only on one side of the column, so this will produce unbalanced bending moment. The bending must be resisted by the column. And in the concentrically loaded column, the bending will be resisted by other part of the side. This bending moment will be balanced by this bending moment, leaving no bending moment to the column. There is zero bending moment. However, in edge columns, when there is slab only on one side of the column and there is no slab on the other side of the column, then it will produce unbalanced bending moment. This bending moment which is being produced by the beam or slab must be resisted by the column itself, because there is no extension of the slab on the other side to balance this bending moment. If the distances between the edge column are same, then the bending moment along this direction will be there, along, for example, this edge direction. But along y direction, there will be balanced. Along this direction, it will be balanced. Because the distance between this column and this column, it is same distance, so in this direction, there will be no bending moment. Or there will be less bending, to be exact. However, in a corner column is a pure case of biaxial bending. Because in the corner column, this bending moment will produce in this direction, as well as bending moment in this direction. So a corner column will be invariably subjected to biaxial bending moments. An edge column will be subjected to uniaxial bending moment. And a centrally loaded column will be subjected to concentric load only with very small or negligible bending moments along both the axes of the column, depending on the situation. If it is perfectly symmetrically loaded, then the bending moments will be very small. However, if the bending moments, if the column is not symmetrically loaded, unsymmetrically loaded, then there will be bending moments along one or both axes. So these are three types of columns depending on the action that they will resist. Edge columns two sides, they bend दूसरा कोना वाला कोने के जो कलम अंदर की तरफ वो तो लोड तो इस साइड को कार्नर कॉलम मैं आपका सवाल को नहीं समझा, लेकिन कार्नर कॉलम जो है, कार्नर कॉलम जब बेंडिंग इस तरह होती है तो बेंडिंग मैंने आपको कर्वेचर समझाया था, कर्वेचर लास्ट टाइम. If this column, which is biaxial column, for example, forget about this side at the moment. So this corner column would be, if it is unbalanced on this side, so it will bend inward, and this will be concave outside. It will be concave outside. So outside concave means tensile stress will be in the outside part of the column. And similarly, now if there is bending moments on this side as well, so this will be concave outside on this side, outside but this side. Okay, so there will be bending moments at tensile stresses in this part of the column. If it is a rectangular column or a square column, so on this side of the column and this side of the column will be tensile stress, because the bending is like this, so curvature will be like this, and the curvature will be like this. So tensile stress in this direction, tensile stress in this direction. And in edge column, the tensile stress will be only on one side of the column, outside. Okay, so although the columns are called as compression members, as I said in this explanation, that there will be always some tensile stress in the column depending on the situation. Okay. The main reinforcement in the column shall be longitudinal, because if the column curvature is along the length, along the height of the column, so the reinforcement must be placed along the
height of the column. Along the height of the column. Okay? The reinforcement must be placed like this. On outside or inner side, we'll discuss later. Theoretically speaking, the reinforcement should be placed on outside of the column. If we apply the concept of beams, because the tensile stress and concave outside. So this concave outside means tensile stress is on the outside of the column. So theoretically speaking, this reinforcement should be placed on the outside edge of the column. In a H column. In a corner column, it should be placed on two sides, which are the outside edges of the column, but not on either side. But this will never happen practically. You will see the design of columns. Why it's not possible? Okay, so longitudinal reinforcement is provided to take care of these bending moments, and the axial load, for example, if the axial load is very large, axial load, then the column, the concrete in the column, along with the reinforcement will resist. So maybe the reinforcement is needed just to resist the axial load if the load is very high. And then you can also see lateral reinforcement, which is provided for shear. Lateral reinforcement. Okay. The lateral ties are bars arranged in a square, rectangular, or circular pattern. They are provided to resist buckling, to hold the main bar. This is not the buckling of the theoretical buckling of columns, which is a concept is related with long columns. It's not talking about it. The buckling of the enforcing bar. The buckling of the enforcing bar. When a column fails, concrete will crush. When concrete crushes, the bond between steel and concrete will end, and there will be no bonding between steel and concrete. After this debonding between steel and concrete, it is possible that the steel bar bulges out or not. So this bulging or buckling out of the steel bars will be resisted by the lateral ties. The continuous spiral can also be provided. They will retain concrete, thus increasing the load carrying capacity. आप लोगों ने आमतौर पर देखा होगा कि आदमी जब फसल उठाता है तो कहते कमर बांध। तो कमर बांधना जो है this is lateral tie, is provided to the car. ताकि उसको laterally उसमें जो कंक्रीट है ना, कंक्रीट को confine कर देता है। आप लोगों ने अगर कहीं भी confined कंक्रीट पे प्रोटेस्ट किया हो, आप एक सिलेंडर उठाएं और सिलेंडर को आप unconfined स्टेट में टेस्ट करें। Unconfined नहीं सिलेंडर्स डायरेक्ट कंप्रेशन में आप सिलेंडर को कस करें और फिर आप उसको कंफाइन करें किसी मटेरियल से कंफाइन करें उसको उसके लिए कोई हाई स्ट्रेंथ कार्बन फाइबर रिइंफोर्स पॉलीमर से रैपिंग है खाद होती है उसकी शीट होती है उसको रैप कर दें विद ग्लू एंड व्हेन यू जस्ट इट आपको 3000 की सही में 4 या 5 बिकॉज़ फायदा नहीं इफेक्ट विल बी मिनिमाइज्ड क्योंकि कंक्रीट फेल होता है जब बल्ज आउट होता है तो फायदा इफेक्ट तो अगर उसको आप कम करके कंफाइन कर दें इसको तो फिर कंक्रीट की एक्चुअल मटेरियल डिप्रेशन होगी जबकि दूसरे केस में सिर्फ मटेरियल बल्ज आउट हो जाता है यानी पार्टिकल्स की क्रशिंग नहीं होती है पहले केस में पार्टिकल क्रशिंग नहीं होती कंक्रीट तो क्रश हो जाता है लेकिन इसका मतलब मटेरियल क्रशिंग नहीं है सैंड पार्टिकल या एग्रीगेट जो है वो क्रश नहीं होते हैं बल्कि बांध टूट जाता है पायदान इफेक्ट अगर आप उसको कंफाइन कर देंगे तो हो सकता है कि फिर एग्रीगेट और सैंड का क्रश होना जो है उसकी काफी स्ट्रेंथ है So this confinement is produced by these lateral ties. Okay, types of reinforced concrete columns according to the lateral reinforcement. Lateral reinforcement can be provided in two ways. One is in the form of stirrups, ties, which were called as stirrups in beams. ये इसमें आप देख सकते हैं ये एक टाई है जो कि कॉलम में प्रोवाइडेड है और इसमें इंडिविजुअल बार्स से एक बार से टाई बनाते हैं और उसको अपने जगह पर उसके प्रोवाइड करते हैं लेकिन स्पाइरल एक विद वन बार प्रोड्यूस स्पाइरल लाइक दिस वन बार एक बार से आप उसको स्टिक इट होल अराउंड द कार It is column reinforced with longitudinal bar at least 6 and continuous spiral. ये है कि जिस तरह की स्प्रिंग होता है ना स्प्रिंग तो स्प्रिंग की तरह उसको इसे लपेट देते हैं विद मशीन और मैनुअली
for middle it is difficult। इसमें ये दो किस्म के कॉलम थे डिपेंडिंग ऑन द लेटरल टाइप्स। एक एक्शन पे डिपेंडेंट है कि कौन सा एक्शन है, तो तीन टाइप्स हैं, कंसंट्रेटिव लोडेड है जो एक्सियल कॉलम है और बाई एक्सियल कॉलम। अब लेटरल टाइप्स अकॉर्डिंग टू लेटरल टाइप देयर आर टू टाइप्स। एक टाइप कॉलम है जिसमें आप एक टाइप प्रोवाइड करते हैं लेकिन वो कंटीन्यूअस नहीं होता, एक पार्ट से बनता है, और एक स्पाइरल होता है, बट इट हैज नथिंग टू डू विद द शेप ऑफ द कॉलम। शेप ऑफ द कॉलम से कुछ ताल्लुक नहीं। पांच लोग कहते हैं कि सर्कुलर कॉलम हमेशा स्पाइरल होता है, नो दिस इज नॉट करेक्ट। सर्कुलर कॉलम भी के बाद सर्कुलर टाइप प्रोवाइड कर देते हैं ना मुख्तलिफ जगहों पर, तो इट इज अ टाइप कॉलम, इट इज अ टाइप कॉलम। लेकिन अगर आप स्पाइरल स्क्वायर कॉलम में भी प्रोड्यूस करें तो वो स्पाइरल कॉलम बन जाएगा, बात समझे। लेकिन रेक्टेंगुलर या स्क्वायर कॉलम में स्पाइरल प्रोवाइड करना मुश्किल होता है बिकॉज़ उसके कोने जो शार्प होते हैं उसमें स्पाइरल बारीक करने का है, लेकिन सर्कुलर बड़ा आसान है। तो जनरली सर्कुलर कॉलम टाइप भी होते हैं लेकिन स्पाइरल भी हो सकते हैं, बात समझ रहे आप, स्पाइरल भी होते हैं। और आमतौर पे जो हमारे रिइंफोर्स्ड कंक्रीट कॉलम्स हम प्रोवाइड करते हैं इन फ्रेंच स्ट्रक्चर तो वो हम टाइट कॉलम के प्रोवाइड करते हैं, लेकिन पाइल्स वगैरह ब्रिजेस में वो स्पाइरल, राइट। स्पाइरल कॉलम की एफिशिएंसी टू द लेटरल लोड इफेक्ट या बाई पे काफी अच्छी होती है, तो वो एक बार होता है स्पाइरल रेशियो, बस इसी वजह से स्पाइरल का जो सेफ्टी फैक्टर है वो टाइट कॉलम से कम है, सेफ्टी फैक्टर। हाँ, टाइट कॉलम इस्तेमाल करते हैं। ओके, as I said earlier, type of reinforced concrete according to loading, there are axially loaded column, which are called concentrically loaded column, and eccentrically, which can be further subdivided into uniaxial eccentric and biaxial eccentric. ठीक है। अच्छा, आप इसमें फिगर में अगर आप देख लें एक्सियली लोडेड कॉलम, तो लोड इज परफेक्टली बैलेंस्ड इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर, ठीक है। और एक्सेंट्रिकली लोडेड कॉलम में चाहे एक साइड पे या दो साइड पे उसका एक्शन इस तरह होगा कि कॉलम है इस तरह से, अगर उसका बेंडिंग मूवमेंट इस तरह है ना, तो m को आप लिख सकते हैं m p इनटू लीवर आर्म आप लिख सकते हैं या p का। तो इसका मतलब है कि जो लोड इस पे उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है या जो लोड उधर से आ रहा है वो लोड इसके बिल्कुल एक्सियल यूनिट एक्सिस पे नहीं जा रहा, बल्कि थोड़ा सा एक्सेंट्रिसिटी पे, उस p डॉट e को हम बेंडिंग मूवमेंट कहते हैं, m कहते हैं p डॉट e eccentric fluid column. Then types of reinforced concrete column according to slenderness. You would have studied these. There are two types of columns: short columns, slender columns. ठीक है, एक इंटरमीडिएट कॉलम्स भी होते हैं, लेकिन हमारे reinforced concrete column में slender column इतने ज्यादा में नहीं होते क्योंकि हमारे कॉलम का साइज अच्छा खासा होता है एज कंपेयर टू स्टील column. The failure in such columns, so in short columns, if a column is short columns, we are not going into the detail of the difference, to show you the difference between short and slender. हम ये नहीं कर रहे, वो किसी और लेक्चर में आपने पढ़े होंगे। Short columns are those columns in which failure occurs due to failure of material. Material इसमें फेल होता है, जबकि slender column में material फेल नहीं होता बल्कि उसमें stability failure होता है, stability failure, lateral deflection जिसको buckling कहते हैं, और lateral deflection और buckling जो है वो सेंटर ऑफ द कॉलम मिड हाइट की बात करता है। जब कॉलम बहुत ज्यादा ट्विस्टिंग बार आता है ना, लंबा सा स्टील बार, तो वो आप खड़ा करेंगे अपने वजन की वजह से पकड़ जाता है, देखा है ना। तो ये हमारे स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू इज द फेलियर, क्योंकि जब आप बकल हो जाएगा तो बेंडिंग तो गिरेगा, लेकिन ये मटेरियल स्टील को खुद तो कुछ नहीं होता। अगर आप स्टील बार खड़ा कर दे, लंबा स्टील बार, तो उसकी मटेरियल तो फेल नहीं होता, दिस इज स्टेबिलिटी फेलियर, स्टेबल नहीं होता है। तो स्लेंडर कॉलम में मटेरियल फेल नहीं होता, यानी कंक्रीट भी अपनी जगह पर ठीक रहता है, स्टील भी ठीक रहता है, लेकिन इतना लंबा हो जाता है कि जिसकी वजह से वो स्लेंडर कॉलम बन जाता है और वो बकल हो जाता है। इन दोनों के दरमियान भी एक कॉलम होता है, जो शॉर्ट होता है, स्लेंडर होता है, इनके दोनों के दरमियान उसमें क्या होता है कि शुरू में तो कंक्रीट का, क्योंकि ये बात याद रखें कि बल्कि this buckling is suited with the load के साथ is suited, लोड के साथ। अगर अपने वजन की वजह से है तो उस चीज में आप समझिए इसमें, लेकिन आमतौर पे अपने वजन से नहीं होगा। जैसे ही आप लोड बढ़ाना शुरू कर देंगे तो एक पॉइंट इस तरह आ जाएगा कि ये
स्टील बार या कारक जो है वो पकड़ हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू में तो वो लोड लेगा, लेकिन बाद में बकल हो जाएगा, और बकलिंग उसकी प्रिशिएबल बकलिंग नहीं होगी लाइक दी लार्ज कॉलम या फिर कॉलम। बकलिंग थोड़ी सी हो जाएगी, फिर उसके बाद क्रशिंग भी हो जाएगी, तो क्रशिंग और बकलिंग दोनों की वजह से जो वो इंटरमीडिएट टाइप ऑफ कॉलम है। लेकिन हमारे रिइंफोर्स्ड कंक्रीट कॉलम्स, मोस्ट ऑफ द कॉलम्स विल बी शॉर्ट कॉलम्स। इसकी कोड डिफिनिशंस है, बट हम वो डिस्कस नहीं कर सकते इस क्लास में कि कोड इसने कोड शॉर्ट कॉलम, स्टैंडर्ड कॉलम इंजीनियरिंग किसको कहता है। We don't have time to discuss these things here. Okay, after this introduction, let's say now, let's see the mechanics of concentrically loaded column. Concentrically loaded column. Okay. You can see in this figure, there is a column with 8 bars inside. Okay. There are 8 bars in the column. अगर इस कॉलम को आप लोड करें बिल्कुल परफेक्टली एक्सियल लोड, तो हर स्टील बार लोड देगा और कॉलम का सेक्शन भी लोड देगा। ठीक है ना? तो अगर हम इसका अगर इसके ऊपर हम लोड अप्लाई करें PU, तो इसका जो रेजिस्टिंग लोड होगा PN, हम कहते हैं ना PU and VM and MU and MM, डिमांड एंड कैपेसिटी। तो अगर PU हो तो इसका PN जो है रेजिस्टिंग लोड हो, PN, और PN रेजिस्टिंग लोड will be produced by the resistance of the concrete core and village of the steel bar, every steel bar। ठीक है जी? अगर हम इसमें 3 लाइंस लगा दें like this, one line is here, other line is here and third line is here, तो इसमें एक इस लाइन पे जो स्टील बार दे विल रेजिस्ट, ये 2 बार भी रेजिस्ट करेंगे और ये 3 बार भी रेजिस्ट करेंगे और कंक्रीट खुद भी रेजिस्ट करेंगे। तो वी विल हैव 1 2 3 4 resisting actions, 4 resistances. So one resistance will come from concrete and that will be area of concrete multiplied by resistance of concrete. So the CC, which is the and the whole section is in compression. The whole section is in compression. ठीक है जी? तो इसमें जो CC होगा, CC which will be the concrete compression, or resistance of concrete will be equal to FC of concrete into AC. And on this line, area of steel of these 3 bars multiplied by FS1, the steel stress in this line of steel bar, and then AS2 multiplied by FS2, and plus AS3 multiplied by FS3. ठीक है? So the equation becomes like this: PN is equal to AS1 FS1 plus AS2 FS2 plus AS3 FS3 plus AC FS3. Equation the right. If you remember, while we were discussing the mechanics of reinforced concrete beam, हम जब reinforced concrete beam का mechanics discuss कर रहे थे, तो उस वक्त हमने एक चीज काफी डिटेल में डिस्कस की थी, और वो ये कि हम कब कहेंगे कि ये बीम फेल हो। किसी को याद है कि बीम फेल हो गया, the beam is failed? हाँ जी? Yes, you are right. The strain in concrete, when the strain in concrete reaches the value of 0.0003, the same applies here. ये लिख रहे हैं आप, the concrete column will be considered as failed, or will be considered to have reached its maximum capacity. ठीक है? When strain in concrete reaches the value of 0.0003, the same concept applies here. अब आप ग्रेड 60 स्टील के लिए yield strength मालूम करें कितना है। Calculate the yield strength for grade 60 steel.
So for some of you, some of the students have asked me this question, that when the steel is compressed, steel bar is compressed, so the properties of steel are the same as in tension, or they are different? They are same. Further information. The properties of steel in compression and tension are same. Okay. So whether you subject the steel to tension, tensile forces, or subject the steel to compressive forces, you will get the same E, the same V, the same. Everything is going to the same. Okay. Point number 02 is the yield strain of grade 60 steel. ठीक है ना? और grade 40 कैसे कम होगा? Very obvious that grade 40 steel yield strain will be less than this. Grade 70 मालूम क्या? Grade 70 is point number 024. Okay, so the yield strain of grade 40, 60, and 70 are going to be, at the moment, we are not talking about the grade 70 steel use. We have started using grade 70 steel in our designs very recent, just a year ago. But if it is grade 40 or 60 or 70, in all these three cases, 0.003 is more than these yield strength, isn't it? 0.003 तमाम स्ट्रेंथ से ज्यादा है या नहीं? ज्यादा है ना? 3 से ज्यादा है ना? 0.0 को आप इग्नोर करें तो 3, 2 और 2.4 से इससे ज्यादा है. ओके. तो जब कंक्रीट में स्ट्रेंथ 0.003 होगा तो इसका क्या मतलब है? स्टील वुड हैव ऑलरेडी yielded. क्योंकि जब 0.003 तक कंक्रीट जाएगा और एंड we also know that the bond between steel and concrete is perfect. So there is no strain. If no strain occurs, the strain in steel and concrete must remain the same. And we know that concrete column would reach its maximum capacity when strain in concrete reaches a value of 0.003. So when strain in concrete is 0.003, strain in steel bars is more than the use. Which means that Fs1, Fs2, Fs3 are equal to Fy. ठीक है क्या? नहीं, जब कंक्रीट का कॉलम आप कंप्रेस करेंगे और उसमें 0.003 स्ट्रेन पे हम कहेंगे कि ये फेल हो गया, ठीक है ना? 0.003 पे क्रशिंग हो जाएगी, तो क्रशिंग से फेल होंगे कि तमाम बार 0.003 पे फेल कैसे हो जाएंगे. तो 0.003 स्ट्रेन जब कंक्रीट में आएगा तो स्टील में भी आएगा. तो एक दूसरे के साथ उसमें कोई स्लिप नहीं, स्टील में कोई स्लिप नहीं है, कंक्रीट के साथ परफेक्टली बॉन्डेड. तो जो स्ट्रेन कंक्रीट में आएगा उतना ही स्ट्रेन स्टील में भी आएगा. अगर स्ट्रेन और कंक्रीट में, अगर स्टील और कंक्रीट में स्ट्रेन बराबर है तो इसका मतलब है कि अगर कंक्रीट में 0.003 स्ट्रेन तो स्टील में भी 0.003 है, और स्टील का स्ट्रेन यील्ड स्ट्रेन 0.002 या 0.024 है, इसका मतलब है कि स्टील यील्ड होता है. तो ये कंसंट्रिकली लोडेड कॉलम की बात याद रखें कि वी नो कि हमें हमारा स्टील जो है it is yielded. We know this for sure that our steel is yielded when steel in concrete, strain in concrete is equal to 0.0. Okay? अच्छा, अब आप इस इक्वेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं because in the beginning we didn't know whether Fs1 is equal to Fy or not, but now we know that the Pn, the maximum capacity Pn, or the maximum resistance offered by the concrete column, which is contributed by steel and concrete both. Okay, so the steel Fs1, Fs2, Fs3 R will be equal to Fy. Will be equal to Fy. Okay, and Fc will be equal to what? Fc. Fc will be equal to 0.853 prime. At 0.003 strain, Fc is equal to 0.00853 prime. Now you can write down this equation like this. This is the explanation which what we already discussed. So after you write down this equation, you substitute the values. Area of concrete will be equal to gross area of column minus AST, because there are bars. If there are 8 bars and 1 bar area is 1 square inch, so minus 8 square inch.
Although it has no physical significance, क्योंकि जब 144 आपका 12 और 11 का कॉलम होगा और आपको मैथ क्वेरी मैथमेटिकली खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? Anyhow, but the area of column to be exact will be equal to gross area of constituent minus these 3 bars, minus 3 bars. आप इक्वेशन को खुद अपने नोट्स पर कीप करते हैं. इक्वेशन को लिखते हैं. If f1 is equal to f2 is equal to f3 will be equal to fy, तो fy में से कॉमन निकल आएगा और s1 s2 plus s3 ये तमाम के तमाम जो है इसको अगर हम एरिया टोटल कहते हैं ast, तो the equation will finally be reduced to this form. Okay, so let's move ahead now. So the nominal axial load capacity, Pn is the nominal axial load capacity. आप ये टर्मिनोलॉजी भी याद रखें. Nominal axial load capacity. हम अब तक nominal flexural capacity पढ़ चुके हैं Mn. Nominal flexure capacity. Nominal shear capacity Vn. And this is nominal axial load capacity. ठीक है जी. दिस इज नॉमिनल एक्सियल लोड कैपेसिटी. और नॉमिनल्स को जब हम डिजाइन कैपेसिटी बनाएंगे तो हम phi से मल्टीप्लाई करेंगे. यू नो दिस दैट नॉमिनल इज mn विदाउट phi, बट phi mn इज डिजाइन फ्लेक्सर कैपेसिटी. phi vn इज डिजाइन शेयर कैपेसिटी. ठीक है ना. स्ट्रेंथ डिजाइन अप्रोच में हम शुरू में पढ़ चुके हैं. स्ट्रेंथ डिजाइन अप्रोच में हम कैपेसिटी नॉमिनल कैपेसिटी को हम कम करते हैं और उसको कम करते हैं इस तरह से कि 5 factor which is less than 1. 5 the factor always less than 1. In the case of flexure it was equal to 0.9. In the case of shear it was equal to 0.75. ठीक है. And in the case of column अभी आप देख लेंगे कि टाइड और स्टाइल column में होता है. तो 5 Pn shall be greater than or equal to Pu. And Pu is the ultimate load जो कि factored load है. ठीक है जी. Okay, you can see the phi value 0.65 for tight column and 0.75 for spiral column. ये आप दोनों याद रखें. टाइट कॉलम मैंने बता देता ना आपको कि स्पाइरल कॉलम की एफिशिएंसी टाइट कॉलम के मुकाबले में ज्यादा है. तो इसके टाइट कॉलम जो है उसका सेफ्टी फैक्टर ज्यादा है और स्पाइरल का कम. So phi Pn in the case of tight column will be 0.65 times the Pn, and in the case of spiral column will be this. ठीक है जी. Next, the code in the section ACI R22.4.2.1 says that an additional reduction factors alpha are used to account for accidental eccentricity not considered in the analysis that may exist in a compression member, and to recognize that concrete strength may be less than Fc prime under sustained high loads. So finally, अच्छा अब आप इसमें एक और फैक्टर है. In the case of beams, flexural capacity और shear capacity में हमने सिर्फ phi mn और phi vn कंसीडर किया. अब कॉलम जो है कॉलम का फेलियर अगर हो गया तो पूरा स्ट्रक्चर खोलेगा, जबकि बीम का फेलियर सिर्फ स्टोरी में प्रॉब्लम आता है. ठीक है. नंबर 1. And number 2, concentrically loaded column will rarely occur in practical situation.
अगर आप बिल्कुल कह दें कि 100% ही कंसंट्रेटेड लोडेड कॉलम है, तो इस तरह मैंने कह दिया कि फील्ड में जब उसको बनाते हैं तो उसका हो सकता है कि ट्राइड पे कॉलम ना है, थोड़ा आगे पीछे डीप हो जाए या लाइव लोड का थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाए, तो इसलिए एसीआई कोड ने एक और सेफ्टी फैक्टर भी इसके ऊपर रखा। और एसीआई कोड को कहते हैं एक्सीडेंटल एक्सेंट्रिसिटीज और एक्सीडेंटल बेंडिंग मोमेंट। एक्सीडेंट का मतलब है कि हाँ, हमने एनालिसिस में तो हमें पता है कि नहीं होगा, लेकिन हो सकता है किसी वजह से आ जाए, ठीक है ना। इस तरह के रूफ है, मैं कहता हूं कि रूफ को कभी लोड नहीं होगा, लेकिन फॉर्मेंटली पर्पस लेट्स से कि 20 साल में के बाद रूफ लोड हो गया और उसके एक साइड पे लोड आ गया, तो उसमें फॉर दिस एक्सीडेंटल eccentricities are bending moments in addition factor alpha is also used. So आप जो 5pn कह रहे थे, it will be alpha 5pn, alpha 5pn, alpha 5pn shall be equal to pu or greater than pu, और alpha factor जो है 0.8 है और 5.65 है पर टाइट कॉलम्स। स्पाइरल कॉलम के लिए अल्फा 0.85 है और 5.75 है। ये दोनों इक्वेशन आप जरा आराम से लिख दें, दोनों इक्वेशन। Trust me, it's not a problem on these equations. Better have these three equations. इसमें स्पाइरल कंटिन्यूस होता है, तो टाइट कॉलम के दरमियान तो स्पेस होता है ना, टाइट इधर टाई है, टाई इधर है, टाई, तो उसमें एक टाई अगर खुल जाएगा कि इसको हो जाए तो पटली बात की सकती है, लेकिन इसमें स्पाइरल कंटिन्यूस है, जिसमें कोई ब्रेक तो नहीं है, तो इसकी एक्सियल लोड कैपेसिटी है, इसकी जो कंफाइनमेंट है, कंफाइनमेंट ऑफ कंक्रीट इसकी बात, इट इज रिलेटिवली बेटर देन द टाइट। हाँ, मतलब आप इस तरह समझ लें कि एक आप आदमी कमर बांधता है, तो एक कमर इधर बांध देंगे दबा, लेकिन एक पूरी कमर बांध दे इस तरह से, तो उसमें फर्क है कि नहीं, उसके दरमियान में कोई स्पेस ना हो, अगर दरमियान में स्पेस हो तो दूर निकल जाएंगे, इसमें तो कोई स्पेस नहीं होता, आप कंटिन्यू करते हैं, उसमें 2 इंच का या 3 इंच का फिट होता है, तो बहुत कम। What is? I got feelings. I think it's the ठीक है, अब ठीक हो गया। अच्छा, आप कोड की कुछ रिकमेंडेशन इस सवाल में करिए, प्लीज आस्क क्वेश्चन। Okay, this was all mechanics of concentrically loaded column. Now ACI recommendations. ACI की रिकमेंडेशन ये है कि कॉलम का साइज अकॉर्डिंग टू ACI कोड 18.7.2 कॉलम शैल बी एट लीस्ट 12 इंच। कॉलम का साइज कम से कम 12 इंच होना चाहिए, ठीक है।
If a column is part of reinforced concrete frame structure, तो इस कॉलम का साइज 12 इंच होना चाहिए. Confining element is something else. Confining element जो मैंने आपको बताया था confining masonry में वो और चीज, वो कॉलम नहीं. Least dimension. According to ACI code 10.6.1.1, columns are of longitudinal reinforcement. For columns, area of longitudinal reinforcement be at least 0.01 ag, but shall not exceed 0.08 ag. क्या मतलब हुआ कि ग्रॉस एरिया जो है आपका कॉलम का जो है उसमें reinforcement 1% का मतलब होना चाहिए. 0.01 ag का मतलब 1% का होगा. मतलब एक अगर 12 बाई 12 इंच का कॉलम हो तो 144 स्क्वायर इंच का एरिया हो गया, जिसका 1% 1.44 स्क्वायर. तो कॉलम में एरिया आपकी कम से कम 1% आपका ग्रॉस एरिया आपका, ठीक है, लेकिन 8% से ज्यादा नहीं होना चाहिए. 8% से ज्यादा नहीं, ठीक है, 1% और 8%. लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग 8% इज टू मच. जब 8% का बात पहुंचेगी तो फिर उसमें रिपोर्ट इतनी कंजेस्टेड हो जाएगी कि उसकी प्लेसमेंट ही नहीं होगी. हम जो आप रिपोर्टमेंट अपने डिजाइन करते हैं कॉलम के लिए तो सेट दैट एक्सीड्स 3%, 2.5%. क्योंकि जब कॉलम में बार्स लैप होते हैं तो उधर आपका एरिया डबल हो जाता है. अगर आपका 2% एरिया आपकी है तो लैप की जगह पर एरिया आपकी 4% बन जाता है. और एक स्टील बार के साथ दूसरा स्टील बार का जब लैप होगा तो जो पहले से एरिया मौजूद है बिटवीन स्टील बार वो काफी कम हो जाता है. इसकी वजह से हम आमतौर पे जब 2%, 2.5% तक हम कर लेते उसके बाद हम इंक्रीज द साइज ऑफ द कॉलम इंस्टेड ऑफ पुटिंग मोर रिइंफोर्समेंट. ठीक है. और इसमें जो पॉइंट है कि इतना ज्यादा रिइंफोर्समेंट क्यों नहीं सकता, तो वो मैंने बता दिया कि स्टील और स्टील दो स्टील बार्स के दरमियान कुछ डिस्टेंस जरूर होना चाहिए ताकि कंक्रीट फ्लोज अराउंड ऑल द बार्स एंड बॉन्ड बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट इज परफेक्ट and no slip occurs at higher loads. तो इसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा क्लोजली बार स्पेस नहीं करनी चाहिए. ठीक है. The lower limit is to prevent failure mode of plain concrete. जब 1% से भी आप रिइंफोर्समेंट कम करेंगे तो फिर प्लेन कंक्रीट की तरह ये क्रश हो जाएगा, ब्रिटल फेलियर होगा. इसमें कुछ भी नहीं. तो 1% आप इसमें डालेंगे ताकि अगर लोड की या बेंडिंग मोमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं हो. This is not a demand requirement. Regardless of whatever the demand is, you will always have to provide 1% of the reinforcement. At least 1%. If it is more than this, okay. But less than this, no, you will always provide 1%. To take care of the brittle mode of failure. And the second upper limit is to maintain proper clearance between bars. Mathematically, इसको ये कि reinforcement ratio, area of steel divided by AG must be greater than 0.01 and less than 0.02. पर इसमें वो बीम की तरह नहीं होता. इनमें नेक्स्ट जब हम ज्यादा करते थे तो ब्रिटल कोऑर्डिनेट से बढ़ेंगे तो कॉलम में ये सच उस किस्म का फेलियर जो हम बीम में पढ़ते थे डक्टाइल और वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता. तो आप देख सकते हैं तो बीम में कोई एक्सियल लोड नहीं. बीम में प्योर बेंड डिरेक्शन. तो प्योर बेंड डिरेक्शन में एग्जैक्टली नहीं पता है कि टेंसाइल और नेगेटिव एक्सियल लोड और बेंडिंग मोमेंट के कॉम्बिनेशन से जो स्ट्रेस पैदा होंगे उसका हमें पता नहीं चलता कि ये इस वक्त कौन से स्टील बार टेंशन में है, कौन से स्टील बार टेंशन में. तो इस वजह से हम इसमें अगर आप फैक्टर्स देखें तो फैक्टर्स आर 0.65 and 0.7 as compared to 0.9. बीम में बिहेवियर बड़ा वेल डिफाइंड बिहेवियर है. इट्स वेरी वेल डिफाइंड बिहेवियर. वेल डिफाइंड बिहेवियर. और हम उसको कंट्रोल करते हैं कि हमारा फेलियर जो है डक्टाइल होगा. कॉलम के केस में इस किस्म का ऐसा ब्रिटल भी नहीं होगा जैसे कि प्योर कंक्रीट का होता है, प्लेन कंक्रीट. लेकिन ऐसा डक्टाइल भी नहीं होगा जिस तरह के बीम्स का होता है. इसलिए इसका फैक्टर आप देखें तो फैक्टर 0.9 से काफी कम है. जैसे 0.7 का मतलब है कि इसमें सेफ्टी बहुत ज्यादा है. सेफ्टी फैक्टर इसमें बहुत ज्यादा है. ठीक है. इसके नॉमिनल एक्सियल लोड कैपेसिटी कितना कम किया गया है? 0.65 and 0.7. उसमें 0.9 है. नॉमिनल फ्रैक्चर कैपेसिटी has been reduced only by 10%. और इसमें 30 और 35% रिड्यूस की.
Okay, the minimum diameter of the bar, a longitudinal bar shall be at least ½ inch. Number 4 or larger bar shall be used as longitudinal reinforcement. कॉलम में आप जब बार इस्तेमाल करेंगे तो आप हमेशा नंबर 4 या लार्जर डायमीटर बार आप इस्तेमाल करेंगे। नंबर 4 और लार्जर यानी ½ इंच का नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8 एंड सो ऑन। नंबर 3 बार इज लॉन्गिट्यूड बार आप इस्तेमाल करेंगे। although in confining elements, in confined material we use number 3 बार, लेकिन वो काम नहीं है, ठीक है। नंबर 3 बार इस्तेमाल करना जो है इसमें क्या हो जाएगा, नंबर 3 बार की कैपेसिटी इतनी कम है, मेरा ख्याल है, आई एम नॉट श्योर कि नंबर 3 बार का जो इस्तेमाल करेंगे तो टू मेनी बार निकाल, but the strength उसकी सेम है, डायमीटर सेम है, so I don't see any reason why it cannot be used। लेकिन मेरा ख्याल में ये है कि शायद उसमें नंबर ऑफ बार से ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि 1% की अगर आप रखेंगे तो नंबर ऑफ बार बहुत ज्यादा हो जाएंगे, ठीक। According to ACI 10.7.3.1, the minimum number of longitudinal bars shall be a minimum of 4 longitudinal bars must be used when the bars are enclosed by space, rectangular or circular ties। अगर स्क्वायर कॉलम है, ठीक है ना, और उसमें टाइट कॉलम, तो टाइट कॉलम में आपके पास हमेशा 4 बार होने चाहिए, एटलीस्ट 4 बार। और अगर कंटिन्यूअस पाइप है तो कम से कम 6 बार एंक्लोज होने चाहिए। मिनिमम ऑफ 6 बार मस्ट बी यूज्ड व्हेन द लैमिनेट बार आर एंक्लोज्ड बाय कंटिन्यूअस पाइप। 4 बार कम से कम और 6 बार पाइप। मिनिमम रिइंफोर्समेंट नंबर ऑफ बार्स की शक्ल में। अच्छा, स्पेसिंग बिटवीन लॉन्ग बार्स, जब आप बार रखते हैं तो एक बार और दूसरे बार के दरमियान फासला कितना होना चाहिए? Continued reinforcement column, clear spacing between bars will be at least the greatest of 1.5 inch or 1.5 dB। दो बार्स के दरमियान क्लियर स्पेसिंग कम से कम 1.5 इंच या 1.5 डायमीटर ऑफ द बार। अगर डायमीटर ऑफ द बार 1 इंच है तो 1.5 इंच हो जाएगा, और जब डायमीटर ऑफ द बार इंच से कम है तो फिर 1.5 इंच होगा। क्योंकि जो ज्यादा है वो इस्तेमाल करेंगे आप। तो क्लियर स्पेसिंग बिटवीन द बार्स, क्लियर स्पेसिंग, समझ रहे हैं ना आपकी बात? क्लियर स्पेसिंग ये है, इस बार के इस साइड से लेकर इधर तक, तो ये आमतौर पे 1.5 से काफी ज्यादा हो। और इस तरह इस बार से इस बार के दरमियान क्लियर स्पेसिंग, उसके एक फेस से लेकर दूसरे फेस तक इस क्लियर स्पेसिंग, ठीक है। क्लियर कवर भी 1.5 इंच होगा। कवर शेड 1.3 इंच कवर प्राइमरी और प्राइमरी रिइंफोर्समेंट टाइज आर फायर। तो टाइज हम आमतौर पर बाहर लगाते हैं, तो टाइज के आउटर एज से लेकर बाहर के कॉलम तक ये फासला बनता है। जिस तरह के बीम में होता था, बीम में भी हम टाइज स्ट्रिप से शुरू करते, स्ट्रिप का जो बॉटम था उससे 1.5 इंच नीचे, इसमें भी इस तरह होगा। ये टाइज से बाहर की तरफ 1.5 इंच का फासला होना चाहिए। लेटरल टाइज डायमीटर, डायमीटर ऑफ लेटरल टाइज, लेटरल टाइज का डायमीटर कम से कम नंबर 3 होना चाहिए। जब तक आपके लॉन्गिट्यूडनल बार नंबर 10 या उससे कम। अगर आपका लॉन्गिट्यूडनल बार नंबर 10 या उससे कम है तो आप कम से कम जो डायमीटर ऑफ द बार है वो नंबर 3 होना चाहिए। लेकिन अगर नंबर 10 से आपका लॉन्गिट्यूडनल बार बढ़ जाए तो फिर आप नंबर 4 इस्तेमाल करें। लेकिन वैसे भी आप नंबर 4 इस्तेमाल करें, ये तो जरूरी है ना। ये तो उस वक्त है कि आप नंबर 5 इस्तेमाल करें, लेकिन बाद वक्त आपके कॉलेज में लेटरल शियर रिइंफोर्समेंट का डिमांड इतना बढ़ जाता है कि जिसकी वजह से हमें नंबर 10 से भी कम में नंबर 4 बार इस्तेमाल करना पड़ता है। लॉन्गिट्यूडनल बार जब नंबर 4 से कम भी होता है तो फिर भी बाद वक्त हमें नंबर 4 बार की टाई या स्पाइरल हमें इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है जी। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, यानी नंबर 10 से आपका
लॉन्गिट्यूडनल बार का डायमीटर बढ़ जाए तो फिर आप नंबर 3 इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप नंबर 4 इस्तेमाल करेंगे जरूर। और नंबर 10 तक आप नंबर 3 जरूर इस्तेमाल करेंगे, नंबर 2 बार इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसको आमतौर पे मार्केट में नंबर 3 बार को 3 सूत्र का बात है, नंबर 4 को 4 सूत्र देते हैं और नंबर 2 को 2 सूत्र का बात है, ठीक है। नंबर 4 को हाफ इंच का बात है, नंबर 6 को पौनी इंच का बात है, बिकॉज इट इज 3/4 पौनी इंच। तो मैं ये कह रहा था कि बाज वक्त आपको डिमांड पे डिपेंड करता है, अगर डिमांड बहुत ज्यादा हो तो नंबर 7, नंबर 8, नंबर 6 लॉन्गिट्यूडनल बार पर भी आप नंबर 4 का टाई लगा सकते हैं। टाइज में कम से कम फासला कितना होना चाहिए? कम से कम 16 डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार, मतलब ये है कि लॉन्गिट्यूडनल बार का डायमीटर अगर 1 इंच है तो 16 इंच हो जाएगा। तो ये डायमीटर ऑफ टाई बार अगर 3/8 तो कितना हो जाएगा? 18 इंच। एंड स्मॉलेस्ट ट्रांसेक्शन डायमेंशन ऑफ मेंबर, अगर 12/12 का कॉलम है तो 12 इंच, 18 इंच और 16 इंच, उसमें 12 इंच इस्तेमाल करें। कम से कम डिस्टेंस या स्पेसिंग बिटवीन द टाइज, कम से कम स्पेसिंग बिटवीन द टाइज कितनी? ये बात याद रखें कि these recommendations are only for a column which is subjected to gravity load only. If the frame is subjected to lateral load also, then these will substantially change. These requirements of the spacing will substantially change, as you will see in the next course of RCP2. These spacing will substantially change. They will be further reduced. If the reinforced concrete frame is subjected to lateral load, such as earthquakes, ठीक है जी? Spacing and diameter of spiral reinforcement. According to ACI, the minimum spiral reinforcement size is 3/8 inch, just like tight columns. And according to ACI 25.7.3.1, spacing of pitch of spiral must not be less than 1 inch and not greater than 3 inch. 1 और 3 इंच के दरमियान इसका पिच चलेगा, ठीक है ना? पिच आप देख सकते हैं पिक्चर में क्या चीज है। अच्छा, अब ये एक डिजाइन है, इधर आप स्टेटमेंट लिखे, नाउ वी विल डिजाइन ए कंस्ट्रक्टिव लोड। आपके पास इक्वेशन है, यू हैव द इक्वेशन, स्टार्ट डिजाइनिंग योरसेल्फ।
स्टेप का मतलब ये कि इसमें 1.2 और 1.6 मल्टीप्लाई होना चाहिए। जो इसके ऊपर कॉलम के ऊपर इसका कंट्रोल डाला है ना, उसमें 1.2 1.6 निकाल दिया के बाद
Okay, let's see what happens. नेगेटिव एरिया का क्या मतलब है? नेगेटिव एरिया का क्या मतलब है? नेगेटिव तो जवाब ठीक है, लेकिन नेगेटिव का मतलब क्या है? नेगेटिव का मतलब है कि एरिया ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है, लेकिन आप 1% डालेंगे जरूर। तो इसके दो तरीके हैं। कंसेंट्रिकली लोडेड कॉलम को हिसाब करने के तरीके दो हैं। अल्फा 5pn आप देखिए 0.85, हम एरिया ग्रॉस एरिया हमारे पास 18/18 का है, हम एज्यूम करते 1% ऑफ इन्फोर्समेंट। लेट्स सी द कैपेसिटी। ये अच्छा तरीका है कि आप 1% तो कम आप डाल नहीं सकते, तो पहले आप 1% पे चेक करें कि इसकी कैपेसिटी कितनी है। अगर 1% पे इसकी कैपेसिटी 300 से ज्यादा है तो बस आप डिजाइन करने की जरूरत ही नहीं है, बहुत तरीके 3.24 स्क्वायर 1% पे एरिया ऑफ है। अल्फा 5pn में नाउ substitute area of seal equal to 3.24 square inch, 0.8 into 0.65. This comes out to be 492 kips, which is greater than 300 kips. So area of seal equal to 1% is enough. जब आप उस तरीके से करेंगे ना तो आपका एरिया ऑफ नेगेटिव आ जाएगा, या अगर पॉजिटिव में भी आएगा तो 1% से कम आ जाएगा, यानी 0.07, 0.08, 0.09 ये आ जाएगा। 0.00 सॉरी 0.00, 0.008, 0.009, 0.00, तो वो अगर है तो आप 0.01 1% डालेंगे, वो आप कहेंगे कि नहीं 1% से कम है। तो इसका ये आसान तरीका है। अब हम जब नंबर ऑफ बार इसमें डालेंगे ना, तो आप स्क्वायर कॉलम में ये बात याद रखिए, इन स्क्वायर कॉलम द बार शैल बी प्लेस्ड इज मल्टीपल ऑफ 4, the total number of bars shall be multiple of 4, 4 8 16 4 8 12 16 इस तरह से आप डालेंगे। अगर आपको 5 बार चाहिए तो आप 8 बार डालेंगे, 6 चाहिए हो तो फिर भी 8, 7 हो तो फिर भी 8, 8 हो तो फिर तो 8 ही, 9 हो तो फिर 12 पे जाएंगे, ताकि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए ऑन ऑल बेसिस ऑफ द कॉलम। using number 6 bars, area of bar equal to 0.44 square inch, you need 7.36 bars, you will provide 8 bars. So 8 number 6 bars will be provided as longitudinal bars. अब लेटरल टाइज पे आप नंबर 3 बार इस्तेमाल करेंगे 0.11 स्क्वायर इंच का। सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग शैल बी लीस्ट ऑफ दिस 16 डायमीटर ऑफ द बार से 12 इंच आ रहा है, 48 डायमीटर ऑफ द बार से 18 इंच आ रहा है, हमारे डायमेंशन ऑफ द बार इज 18 इंच, ठीक है ना। Therefore use number 3 ties at the rate of 12 center to center. So the column should look like the final. Okay जी, ठीक है ना। टाइज इनका शेयर भी तो हमने तो इधर लोड करने की बात नहीं की, हम डायरेक्ट हाँ गुड, अच्छा प्लीज। ओके, देयर इज ए क्वेश्चन, आपका क्या नाम है? मेहरान, फ्रॉम मेहरान। that we have provided data types without any calculation, हमने सिर्फ स्पेसिंग प्रोवाइड की और हमने नहीं कहा कि शेयर इक्वल हमने। तो शेयर डिजाइन ऑफ कॉलम जो है इज वेरी रेयरली नीडेड, क्योंकि कॉलम में बीम में तो ट्रांसफर्स लोडिंग होती है ना, और कॉलम में लोडिंग ऊपर से नीचे की तरफ है, तो अलोंग द लेंथ ऑफ द कॉलम है। इसमें इस तरह की शेयर रिइंफोर्समेंट आपकी लेटरल लोड के लिए चाहिए होती है। अर्थक्वेक में इस किस्म की लेटरल लोड आ सकती है, लेकिन वो हम इस वक्त पढ़ते नहीं। तो ग्रेविटी लोड पे ज़्यादा रिक्वायरमेंट यानी शेयर
शेयर डिमांड इतना ज़्यादा नहीं होता कि हम उसके लिए कैलकुलेशन करें, इसलिए हम सिर्फ स्पेसिंग देते हैं। ठीक है, बाकी अगर शेयर के लिए आपको डिज़ाइन करना पड़ गया तो इट इज़ एग्जैक्टली द सेम एज यू हैव ऑलरेडी डन फॉर डिज़ाइन। ठीक है जी, इसमें कोई फर्क नहीं है। आपके पास सिर्फ शेयर फोल्ड डायग्राम होना चाहिए, तो 5EC 5EC 5EN बिल्कुल एक उस तरह, इसमें कोई फर्क नहीं। जी प्लीज। ज़्यादा तो हम काम का सही बोला, काम का सही बढ़ा देंगे, कंक्रीट डिस्टेंस बढ़ा, कंक्रीट डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं, काम का सही बढ़ा। हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं ना, बल्कि 4। एक हमारे पास एरिया ऑफ साइज ऑफ द कॉलम, जैसे एरिया ऑफ कंक्रीट। दूसरी चीज हमारे पास कंक्रीट की स्ट्रेंथ एच प्राइम। तीसरी चीज हमारे पास एरिया ऑफ सी, और चौथी चीज हमारे पास एक वाई। ठीक है, ग्रेड ऑफ सी। ये डायमंड माल जो प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं बिल्कुल यूनिवर्सिटी रोड पे, फॉर द फर्स्ट टाइम यू विल बी यूजिंग ग्रेड 70 स्टील, ग्रेड 70 और 6,000 की सही कंक्रीट स्ट्रेंथ, 19 स्टोरी स्ट्रक्चर। तो 19 स्टोरी पे आपका कॉलम साइज जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, 50 से 60 इंच, 5 बाई 5 फुट का कॉलम। तो 5 बाई 5 फुट का कॉलम बहुत जगह घेर सेव द स्पेस, स्पेस कम घेरे, और क्योंकि इसमें जितना एरिया आपने कॉलम से कवर कर लिया, यू कैन नॉट सेपरेट एरिया, फिर आप चला गया। तो सेलेबल एरिया बढ़ाने के लिए, क्योंकि पर स्क्वायर फुट एरिया बेचते हैं ना, दुकान के लिए पर स्क्वायर फुट एरिया बेचते हैं। इधर 80 यूनिवर्सिटी रोड पे 80 to 85,000 पर स्क्वायर फुट रेट है एक ग्राउंड फ्लोर पे, 85,000 पर स्क्वायर फुट, एक स्क्वायर फुट का रेट 85,000। तो अगर आप एक कॉलम को थोड़ा सा एक फुट भी बढ़ा देंगे तो उनका बड़ा नुकसान हो जाता है। तो फॉर दिस रीजन वी इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एज वेल एज द स्ट्रेंथ ऑफ स्टील इन ऑर्डर टू रिड्यूस द साइज ऑफ कॉलम। ये अभी एक पाठ्य को फिर आप मोटर नहीं नो जीरो पर फिर आप फिर मोटर अगर आप ना बड़े बात कैसे करें इसलिए तो ये 5 फ्लोर्स पर आ रही है जो ब्लॉक बल ब्लॉक है जी पहले करें ना आप एक तरफ खाली एक तरफ बनाना। हाँ, एक तरफ बना, ठीक है जी। अच्छा, ये कुछ मुख्तलिफ किस्म के कॉलम्स के शेप्स हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि कॉलम के जो बार्स हैं उसमें लॉन्गिट्यूडनल बार्स के साथ साथ टाई बार भी दिखाए गए हैं। मुख्तलिफ इसकी अरेंजमेंट्स हैं, डिफरेंट अरेंजमेंट्स। क्या चीज इसमें ए में नहीं, सेंटर में तो सेंटर में क्या फायदा है आपका जो डी बनेगा ना, हम तो वर्टिकल बार लॉन्गिट्यूडनल बार बेंडिंग मोमेंट के लिए प्रोवाइड करते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट तो डी कर्वेचर बाहर की तरफ आप इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। अगर इधर से हो तो फिर भी बाहर की तरफ है, इधर की हो तो फिर भी बाहर की तरफ है, तो आपका डी तो बनेगा बाहर। जितना बाहर होगा इन्फोर्समेंट अंदर बताने के तो सिर्फ एक जेल लोड में फायदा देगा, बाकी तो कोई फायदा नहीं। और एक जेल लोड के लिए कॉलम में कंक्रीट इज इनफ, देयर इज नो नीड ऑफ इन्फोर्समेंट। आपने देख लिया। अच्छा, आप जरा ये मालूम करें कि ये 18 बाई 18 इंच का कॉलम था, इसके सिर्फ कंक्रीट की कैपेसिटी कितनी, सिर्फ कंक्रीट की कैपेसिटी विदाउट रिइंफोर्समेंट। अठारह बाई 18 इंच कॉलम की सिर्फ कंक्रीट की कैपेसिटी मालूम करें। हाँ जी, कितनी आ रही है? नहीं खैर अफेक्टेड भी लगा दें।
फैक्टर्स लगा दी। आप इस इक्वेशन में, जो इक्वेशन है ना आपके पास, उस इक्वेशन में कंक्रीट का पार्ट अलग है और स्टील का अलग है, दोनों को आप अलग अलग लिखें। ये इक्वेशन आपके पास है ना, इससे कितना आ रहा है? 500 कैसे आ सकता है, क्योंकि टोटल तो 492 है। टोटल तो 492 तो टोटल है ना, 500 नहीं आ सकता। सिर्फ कंक्रीट का कितना आ रहा है? सिर्फ स्टील का है 3.24 into 40 जी, 425 कंक्रीट का है आउट ऑफ 492। तो स्टील का कितना रह गया? कुछ भी नहीं है। स्टील की एक्सियल लोड कैपेसिटी कुछ भी नहीं है कंक्रीट के मुकाबले में, एक्सियल लोड कैपेसिटी। लेकिन अगर बेंडिंग कैपेसिटी आप मालूम करें तो कंक्रीट की जीरो है। बेंडिंग कैपेसिटी, फ्लेक्चर कैपेसिटी, कंक्रीट तो टेंशन नहीं दे सकता ना, ये तो कंप्रेशन की बात हम कर रहे हैं। तो कंप्रेशन में कंक्रीट डज नॉट गिव स्टील। आपने देखा स्टील की कैपेसिटी नहीं है, इसकी तो कोई कैपेसिटी है ही नहीं। 325 492 में 425 कंक्रीट की परसेंटेज मालूम करें कितनी परसेंट? एक परसेंटेज आप मालूम करें। 86% is given by concrete। लेकिन ये सिर्फ कंप्रेशन में, ये बात याद रखें, दिस इज ओनली इन कंप्रेशन। कंप्रेशन में कंक्रीट की कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 85% और स्टील की कंट्रीब्यूशन 15%। अगर स्टील न भी हो, इसमें निकाल भी दें, फिर भी 425 है, which is greater than 300। there is no need of any reinforcement। लेकिन एशियाई कोड के मुताबिक आप 1% वो अलग बात है। अच्छा, अब 425 किट जो है सिर्फ कंक्रीट की कैपेसिटी, अगर आप इसको टन्स में कन्वर्ट करें तो टन्स में कितनी हो जाएगी कैपेसिटी? टू 2.204 पे डिवाइड करें, टन्स में आ जाएगी। कितनी टन आ गई? 2.204 से डिवाइड करें, 190, तकरीबन 200 टन इसकी कैपेसिटी है, 200 टन। और एक ट्रक का वजन कितना होता है? 1000 टन। 1000 kg तो 1 टन होता है। 1000 kg is 1 टन। 1000 टन तो बहुत बड़ी चीज है। एक ट्रक का एवरेज वजन 40 से 50 टन के बराबर होता है। अगर ओवरलोडेड ट्रक हो तो 50 टन, वरना आम 32-35 टन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? तो अगर 50 टन का ओवरलोडेड ट्रक भी हम कंसिडर करें तो इसका मतलब है कि इस कॉलम के ऊपर आप अगर एक दूसरे के ऊपर 4 ट्रक खड़े कर दें तो लोडेड ट्रक, ओवरलोडेड ट्रक एक दूसरे के ऊपर 1 2 3 और 4, तो फिर भी तमाम सेफ्टी फैक्टर के साथ इसकी कैपेसिटी जो है इतनी है कि 4 ट्रक का वजन उठा ले स्टील के बगैर। और कॉलम का साइज कितना है? 18x18। अब अगर आप एक 12x12 इंच का कॉलम दें, इसको 1 स्क्वायर फुट हो जाएगा। 1 स्क्वायर फुट, 1 स्क्वायर फुट का कॉलम है, 1 स्क्वायर फुट का आपका ये फ्लोर है। और इसमें कंक्रीट स्ट्रेंथ है 3 KSI या 3000 PSI, जो कि नॉर्मल स्ट्रेंथ है। जरा इसकी कैपेसिटी मालूम करें, बट विदाउट फैक्टर मालूम करें, फैक्टर के बगैर डायरेक्ट मालूम करें। हाँ, अच्छा ये बताता हूँ। 432 किप, इसको 2 पे डिवाइड करें तो 200 टन हो जाएगा। 2.204 पे 200 टन। तो ये अगर 12x12 यानी 1 फुट बाई 1 फुट का कंक्रीट आपके पास हो, कंक्रीट का एक ब्लॉक हो या कंक्रीट का कॉलम हो, कुछ भी हो, और उसकी स्ट्रेंथ 3000 PSI हो, तो 200 टन का वजन विदाउट सेफ्टी फैक्टर वो उठा ले। यानी 4 ट्रक आपको के ऊपर कर सकते हैं। 1 स्क्वायर फुट के 3000 PSI कोई मामूली स्ट्रेंथ नहीं, लेकिन सिर्फ कंप्रेशन, टेंशन में जीरो। तो हम स्टील प्रोवाइड करते सिर्फ टेंशन में, कंप्रेशन में तो हमें जरूरत भी नहीं। अच्छा, इसका क्वेश्चन ये है कि आप 18x18 इंच का कॉलम लेट्स से कितना हाइट हो सकता है? तो हम जो इस वक्त बात कर रहे हैं, ये हम स्टोरी हाइट की बात कर रहे हो। स्टोरी हाइट हमारे पास 10 12 13 14 15 फुट तक तकरीबन होता है। हाइट बढ़ाने से आपका कॉलम, इसमें 2 टाइप्स कॉलम्स के आप इधर डिस्कस कर लिए, शॉर्ट कॉलम, एक्सटेंडेड कॉलम। तो हाइट बढ़ाने से आपका इनिशियली शॉर्ट कॉलम बेस में बढ़ सकता है। कितने दिन पे पड़ेगा?
आपको कैलकुलेशन से पता चलेगा। वो स्लैंडरनेस रेशियो K/R की वैल्यू जब विश्वास से बढ़ जाए तो उसके बाद आपका इकानम स्लैंडर हो जाएगा, ठीक है ना। और स्लैंडर जब हो जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे, आप कॉलम का साइज बढ़ाएंगे तो फिर आप चार्ट को बना देंगे। या अगर आप नहीं बढ़ा तो फिर आप स्लैंडर कॉलम की तरह डिजाइन करेंगे। इस वक्त जो डिजाइन हम कर रहे हैं, इट हैज नथिंग टू डू विद द स्लैंडरनेस ऑफ द कॉलम। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि मेरा कॉलम शार्प और मटेरियल फेलियर हो रहा है। देयर इज नो बकलिंग, देयर इज नो स्टेबिलिटी प्रॉब्लम एट ऑल, there is no stability problem at all, which means आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि 10-12-13 फुट तक बस्ती के लिए अगर उससे बड़ा उसकी हाइट बढ़ गई तो फिर हमें उस कॉलम को देखना पड़ेगा कि ये स्टैंडर तो नहीं बन गया, ठीक है। तो आपने देख लिया कि कंक्रीट की स्ट्रेंथ 3000 psi मामूली चीज नहीं है। 3000 psi 1 फुट बाय 1 फुट यानी 1 स्क्वायर फुट can bear the load of 4 overloaded trucks, ठीक है। Please. तो उसमें आप ब्रिज के गियर्स की बात कर रहे हैं या फाइल्स की बात कर रहे हैं? ऊपर उसको मतलब वो ऊपर जो है टेक्निकली दे आर टारगेट्स गियर्स या जो कॉलम ब्रिज के जो कॉलम उसमें स्पेन जब बढ़ता है ना तो सिर्फ लोड की वजह से बिल्डिंग मूवमेंट तो नहीं आती है, लोड स्पेन को नहीं पड़ जाता है ना। जब स्पेन आपका बढ़ता है तो उसके ऊपर आपका पूरा डेड लोड पड़ जाता है। ब्रिज में 75% तो डेड लोड होता है, लाइव लोड तो बहुत कम होता है, 40 ब्रिज का आपका इतना वजन होता है, ठीक है। रिइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर्स में इसका एक डिसएडवांटेज ये है रिइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर्स का, इसका अपना वजन बहुत ज्यादा है। इट इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ रिइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर। इसका अपना वजन इतना ज्यादा होता है कि अपने वजन को जब ये काबू कर ले, अपने वजन से अगर रिइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर फेल न हुआ तो लाइव लोड से कभी फेल नहीं होगा, इट कैन बी गारंटी, इट विल नेवर फेल ड्यू टू लाइव। और जो आप लोग बात अगर सुनते हैं कि कोई स्ट्रक्चर फेल हो गया, ये हो गया, तो द मेन रीजन ऑफ द स्ट्रक्चर फेलियर इज द सेटलमेंट ऑफ द फाउंडेशन। उसमें बाद में सीपेज होता है पानी का, उसमें फाउंडेशन सेटलमेंट हो जाता है, या सम पीपल डू अमेंडमेंट इन द स्ट्रक्चर। बाद लोग स्ट्रक्चर में जब ऑक्यूपेंट स्ट्रक्चर के अंदर बिल्डिंग के अंदर रहते हैं ना तो वो कुछ उसमें चेंजेस कर लेते हैं, वो चेंजेस की वजह से लोड पाथ डिस्टर्ब हो जाता है। अदरवाइज अगर एक स्ट्रक्चर डेड लोड की वजह से नहीं गिरा तो लाइव लोड की वजह से कभी नहीं गिरेगा, बिकॉज लाइव लोड विल जस्ट क्रिएट अ स्मॉल डिस्टर्बेंस टू द टोटल लोड which is created by the structure। इतना आप लाइव लोड डेड लोड निकालें, आपने अगर कोई एग्जांपल आपने जो डी देखी आप उसमें निकालें, लाइव लोड टू डेड लोड का बहुत स्मॉल पोर्शन होता है, टोटल लोड डेड लोड बहुत ज्यादा होता है रिइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर में, जबकि स्टील स्ट्रक्चर में पर डेड लोड कम होता है। लाइव लोड से तो फिर भी ज्यादा होता है लेकिन रिइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर के मुकाबले में कम। इससे जब बिल्डिंग की हाइट बहुत बढ़ जाए, नंबर ऑफ स्टोरीज इंक्रीज हो जाए, तो फिर विद द मोर देन 20-25 स्टोरीज में फिर हम then we start thinking of using steel structure instead of reinforced concrete structure। फिर हम कंपैरिजन करते हैं ये स्टील इस्तेमाल करें कि कंक्रीट इस्तेमाल करें। प्योर स्टील स्ट्रक्चर्स made of the steel sections, not of the reinforcement, ठीक है। कंबाइन आप मिक्स स्ट्रक्चर में कर सकते हैं। There is another now example for you. We'll quickly solve this example yourself now। हम आप ये दूसरा एग्जांपल है इसको आप करें quickly please। पूरी कॉलम इसका मतलब डायमीटर जी सर कुछ डायमीटर 24 है और ये पूरा डायमीटर वहां से कॉलम डायमीटर रेडियस diameter yes 24-inch spiral column means the diameter of the column is 24 diameter of the column is 24, not radius। Thank you।
ओके जी, हो गया? क्या जवाब आ रहा है जी? ये फाइल निकालना फाइल निकालने में आप कम से कम नंबर 6 बार नंबर 6 हाँ जी नंबर 6 आते थे 1% is that number 1% is required okay 1% is 24 inch 5 by 4 this पे निकालें आप सर बोले कि हमारा 4.5 एरिया ऑफ 4.5 to 1% 4.25 5 by 4 डी स्क्वायर से आता है तो इसमें आप नंबर 6 बार से डिवाइड करें 0.44 से ठीक है आप इसमें 10 11 12 13 डाल सकते हैं स्पाइरल में स्पाइरल मसला नहीं है क्योंकि अगर आपके पास स्क्वायर कॉलम हो तो फिर आप हर एक को बाहर रखेंगे तो स्पाइरल तो आप 10 11 12 जो भी रखना लेकिन 6 से कम नहीं है नंबर 6 है नहीं नंबर ऑफ बार्स टोटल नंबर ऑफ बार्स will be 6 total number of bars the spiral column should be at least 6 bars the limit of the bar number 4 bars तो मैंने बता दिया कि हाफ इंच से कम डायमीटर का बार इस्तेमाल नहीं करेंगे और स्क्वायर कॉलम में कम से कम 4 बार्स और स्पाइरल कॉलम में कम से कम 6 बार्स आप बात करेंगे तो फिर स्पाइरल लाभी सर हाँ ये जब हम सेट करेंगे वो बीम की तरफ 0.15 मल्टीप्लाई बाय एरिया जब हमें डेड लोड फिर और एक्सक्लूडिंग सेल्फ वेट करना पड़ेगा कारण का सेल्फ वेट जो है ना कारण के ऊपर जो लोड आता है उसका कारण इसका अपना कितना होता है एक सेल लोड कोड है सेल लोड है बीम की यूनियन एक सेल लोड का 234 बाय 24 इंच प्रेस ऊपर आते हैं और प्रेस का अपना टोटल वजन लेंथ ये आपका सेल लोड है वॉल्यूम से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.15 के पर डिफरेंट है आपका टोटल वोट पर फुट वजन आता है तो ये कुछ भी नहीं है इसका आप इसके ऊपर स्लैब और ऊपर से वजन आता है और उतना ज्यादा होता है इसका अपना वजन आप उठाओगे नहीं अगर ये अपना वजन भी नहीं उठाता तो कोई कारण नहीं अच्छा, हम 1 बजे आज क्लास खत्म करेंगे बिकॉज वी हैव मीटिंग 1 पीएम से 15 मिनट हमारे पास है तो इसको शुरू कर लेते हैं और फिर आगे क्लास में इसको खत्म करेंगे ठीक है now the eccentrically loaded column as we said earlier that when the load is acting at some eccentricity it will produce some bending moment ठीक है जी जिस तरह कि आप देख सकते हैं इसमें ये P है this will create a bending moment MUY or MUX MUY is a bending moment about y direction अगर ये देखिए मेरे हाथ की तरफ
अगर ये x डायरेक्शन है और ये y डायरेक्शन है, तो m/x जो होगा m/x, वो m/x ऐसे होगा in this direction along this thumb, the thumb will point towards the x direction, ठीक है, ऐसे होगा। और m/y जो है अगर ये है तो आपका m/y ये y प्लस या माइनस, ठीक है। तो along the thumb जो है राइट हैंड रूल से आप इसको करेंगे। m/x का मतलब ये है कि बेंडिंग मोमेंट जो है आपका अबाउट y है लेकिन along the x, समझ रहे हैं आप? इस तरह आप देख सकते हैं ये x और y क्रॉस देखते हैं ना, this is x, so eccentricity is along the x direction, eccentricity is along the x, but the bending moment is m/y, क्योंकि जब ये बेंडिंग मोमेंट ऐसे प्रोड्यूस करेगा बेंडिंग मोमेंट, तो ये y के डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा। So when the eccentricity is along the x direction, the bending moment will be produced according to the right hand rule along about the y direction, about the y direction। और इस तरह से गति eccentricity इस तरह हो और बेंडिंग ऐसी हो तो बेंडिंग x direction में x होगा। When eccentricity is along the y, the bending moment will be along, अब x कॉलम है ना, x कॉलम और ये मेरा x डायरेक्शन, तो बेंडिंग ऐसे हो तो ये y डायरेक्शन, this is the x। कार्बन कॉलम में if this is x and this is y, तो इसमें ये y m/y और ये m/x अगर इस x डायरेक्शन, ठीक है। तो इसमें यूनिएक्सियल बेंडिंग का पहले हम लेट्स से दिस एच का जिसमें बेंडिंग मोमेंट रिपेयर डायरेक्शन में है, तो इसमें क्या इफेक्ट आएगा। हम इसके लिए इक्वेशंस लिखना शुरू कर देते हैं। पहले जो हमारे पास केस था तो उसमें सिर्फ एक्सियल लोड था, तो रेजिस्टेंस नॉमिनल एक्सियल लोड कैपेसिटी का बिल्कुल TC प्लस AS1 और इसमें डालता और तमाम का तमाम कंप्यूट का सेक्शन कंफ्यूजन है। अब मसला ये है, आपको इसको गौर से देखें। When there is an axial load and also there is bending, तो axial load और bending moment जो है उसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा कि जो इसका आउटसाइड उसमें टेंशन आएगा या नहीं। जैसे कि axial load बहुत ज्यादा है, axial load का कंप्रेशन प्रोड्यूस कर देगा और बेंडिंग मोमेंट क्या करेगा, बेंडिंग मोमेंट आउटसाइड टेंशन प्रोड्यूस करेगा, वो आउटसाइड टेंशन इस कंप्रेशन के साथ जमा हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जो इनर साइड पे कंप्रेशन है वो इस कंप्रेशन के साथ जमा हो जाएगा, तो इनर साइड पे कंप्रेशन बढ़ा देगा और बैक साइड पे जो है वो टेंशन और कंप्रेशन आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो अगर टेंशन और कंप्रेशन बराबर है तो जीरो टेंशन होगा और कंप्रेशन ज्यादा होगा। और अगर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू इतनी ज्यादा है कि टेंशन कंप्रेशन को ओवरकम करने के बाद दोबारा वो टेंशन डाले तो टेंशन आ जाएगा। तो समझे कि नहीं? दोबारा मैं कहता हूं, when a concrete section is fully in compression, जिस तरह कंप्रेशन की लोड का तो इस तरह से अफवाही करेगा। लेकिन अगर इसमें ये लोड भी है और बेंडिंग मोमेंट भी है तो इनके लोड की वजह से आपके पास एक कंप्रेशन स्टेट ऑफ स्ट्रेस आ जाएगा, कंप्रेशन स्टेट ऑफ स्ट्रेस FC and FC at both ends without bending moment। फिर बेंडिंग मोमेंट की वजह से फ्रंट पे FC और आउटसाइड इनर साइड पे FC और आउटसाइड पे FC होगा। स्ट्रेट डायग्राम लाइक दिस वन, ठीक है। स्ट्रेट डायग्राम इसमें ये कंप्रेशन और रिडक्शन। अब ये अगर मैं इधर एक फुल कंप्रेशन का लोड पे से ड्रा करूं, फुल कंप्रेशन, तो वो C के साथ जमा हो जाएगा तो डबल C कर देगा और वो C के साथ जमा हो गया तो कैंसिल कर देगा, क्या इधर कुछ C रह जाएगा या इधर T रह जाएगा। अब वो डिपेंड करता है दोनों के मैग्नीट्यूड पर कि एक्सियल लोड और बेंडिंग मोमेंट के मैग्नीट्यूड आपस में किस तरह से। अगर बेंडिंग मोमेंट इतना ज्यादा है कि वो टेंशन कंप्रेशन को भी खत्म कर देता है और फिर भी टेंशन प्रोड्यूस कर देता है, दिस पॉसिबल कंबाइंड एक्शन से। और यहाँ एक्सियल लोड बहुत ज्यादा है और बेंडिंग मोमेंट बहुत कम है तो कंप्रेशन बढ़ जाएगा और टेंशन पीछे कंप्रेशन को थोड़ा कम कर देगा लेकिन टेंशन नहीं आएगा। I want to understand this. So this diagram can be drawn in several ways depending on the magnitude of axial load and bending moment. This is the case where the bending moment is substantial and tension is being produced on this side. ठीक है ना? ये कारण इसमें ये है बेंडिंग मोमेंट एक्स डायरेक्शन में है और एक्सेंट्रिसिटी एक्स डायरेक्शन में है, तो इसमें बेंडिंग ऐसे होगी यानी साइड टेंशन में होगा, ये साइड कंप्रेशन, क्योंकि P इधर है। जब P को आप इधर प्रेस करेंगे तो कॉलम ऐसे बेंड हो जाएगा, इस साइड बेंड, कॉलम विल बेंड लाइक दिस। व्हेन दिस P is pressed, तो ये इसको खींचेगा इस तरफ और इस साइड पे टेंशन और साइड पे कंप्रेशन। लेकिन ये P एक्सियल लोड भी प्रोड्यूस कर रहा है। इस तरह ये
देखिए अगर एक एच पे कॉलम है और उसके साथ एक बीम में चला जाऊंगा, तो इस बीम का शेयर किधर जा रहा है? शेयर ऑफ द बीम या इसका रिएक्शन ऑफ द बीम, where it is going? It is going to the column. The reaction of the beam is going to the column. ठीक है जी? तो ये एक्सियल लोड कॉलम के ऊपर आ जाएगा, लेकिन इसका जो कनेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है बीम के, वो बेंडिंग मोमेंट बैलेंस नहीं हो सकता क्योंकि आगे साइड पे कोई बीम नहीं, तो जब अनकनेक्ट बेंडिंग मोमेंट विल बी टेकन बाय दिस कॉलम, तो एक इसके ऊपर एक्सियल लोड आएगा और एक इसके ऊपर बेंडिंग मोमेंट भी आ जाएगा। अब दोनों के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है कि इसके पास क्या होगा फाइनल। तो लेट्स से इसमें काफी सारी सिचुएशन पड़ सकती है, इनफाइनाइट सिचुएशन बहुत ज्यादा, पूरा कंप्रेशन में फिर कुछ कंप्रेशन टेंशन फिर जीरो, तो हम इसमें एज्यूम करते हैं दिस इज एन एज्यूम स्टेट ऑफ स्ट्रेस, दिस इज एन एज्यूम एंड द स्टेट ऑफ स्ट्रेस इज सच दैट इसमें बेंडिंग मोमेंट इतना है कि उसने टेंशन प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है ना? क्योंकि हम डेरिवेशन करेंगे तो हमें कुछ असम्पशन करनी पड़ेगी कि कौन सा स्टेट ऑफ स्ट्रेस मेरे पास है, और इस स्टेट ऑफ स्ट्रेस के लिए जो हम डेरिवेशन कर देंगे, तो अगर इस स्टेट ऑफ स्ट्रेस के मुताबिक आपकी वैल्यू आ रही है तो आपकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, लेकिन अगर आपकी वैल्यू नेगेटिव आती है तो इसका मतलब ये है अगर आपके टेंशन साइड पे एक के साथ नेगेटिव आ रही है इसका मतलब है कि आपके ऊपर कंप्रेशन है, और समझ रहे हैं ना? तो विद दिस अरेंजमेंट या विद दिस स्टेट ऑफ स्ट्रेस नाउ वी डिराइव इक्वेशन, समझ रहे हैं आप? तो this अगर आप इस स्टेट ऑफ स्ट्रेस को देखें, this state of stress is more or less the same as we have discussed in the case of peace, compression and tension. आगे साइड पे कंप्रेशन था बीम में, ऊपर साइड कंप्रेशन की टेंशन था, इस पे भी एक साइड पे कंप्रेशन, दूसरी साइड पे टेंशन, ठीक है? अब इसमें एक इक्वेशन हम लिख सकते हैं इन द केस ऑफ नॉमिनल कैपेसिटी। तो नॉमिनल कैपेसिटी जो है कॉलम की, वो इसमें आप देखें एक कंप्रेशन फोर्स इसमें नहीं है, इस पर जो स्टेट ऑफ स्ट्रेस है, in this state of stress, this part is in compression, this part is in compression, तो इस पार्ट में जो स्टील है वो भी कंप्रेशन में है और इस पार्ट में जो कंक्रीट है वो भी कंप्रेशन में, लेकिन ये सारे जो है इस तरफ ये सारे का सारा कंक्रीट टेंशन है। तो जब हम इसकी नॉमिनल कैपेसिटी लिखेंगे कंप्रेशन में, नॉमिनल कैपेसिटी इन कंप्रेशन, तो कैसे हम लिखेंगे? इट विल बी CC plus CS but minus 2, तो ठीक तो माइनस, तो यू राइट दिस नॉमिनल कैपेसिटी एक्सियल लोड कैपेसिटी जो इसकी होगी वो CC plus CS minus 2 नहीं हो, समझ रहे हैं आप? अच्छा, ये नॉमिनल एक्सियल लोड कैपेसिटी जो है should be greater than or equal to PU, you know this. In the case of columns, in the case of beams, what is the value of PU? PU की वैल्यू कितनी होती है कॉलम बीम्स के केस में? Beams के केस में what is the value of PU? PU, what is the value of PU in the case of beams? जी, PU नहीं होता, PU is 0. तो PU जब 0 होगा तो ये मतलब ये है कि PN is greater than, तो ये CC plus CS minus 2 will be equal to 0 और CC plus CS will be equal to T, तो ये बिल्कुल W4 बीम की तरह है। CC plus CS equal to T, ये बिल्कुल जस्ट लाइक W4 बीम, उसमें आपके पास दो कंपोनेंट होते हैं कंक्रीट में, स्टील पार्ट एंड कंक्रीट पार्ट इज इक्वल टू T ऑन द टेंशन साइड। तो जब इसमें PU 0 हो तो इट इज जस्ट लाइक B, बात समझ रहे हैं आप? लेकिन इसमें एक्सियल लोड है, ये बीम नहीं निकाल, तो उसमें हम इस तरह लिखेंगे PN is equal to CC plus CS minus T। अच्छा, दूसरी इक्वेशन हम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ बेंडिंग मोमेंट, वो नेक्स्ट स्लाइड पे है। जब आप 5 PN जो है 5 PN में आप इक्वेशन को कंप्लीट करें, 5 PN में वैल्यूज डाल दें। अच्छा, अब इसमें जो प्रॉब्लम है लास्ट जो कंसंट्रेटिवली लोडेड कॉलम हम डिस्कस कर रहे थे, हमने उसमें कहा था कि पूरे का पूरा सेक्शन कंप्रेशन में और कंक्रीट 0.003 पे कट हो जाएगा तो स्ट्रेंथ C में 0.003 से ज्यादा होना चाहिए, तो बराबर होना चाहिए। इसका मतलब है कि स्टील रिड्यूसिंग हो रही है, ये हमें कनेक्ट है, हम ये नहीं कह सकते, हम ये नहीं कह सकते क्योंकि 0.003 पे जो कंक्रीट है वो तो कंप्रेशन साइड पे है, so we can't say anything। और इधर जो है PS1
ये इससे थोड़ा सा फासले पर है, तो अगर 0.003 है तो ये मुझे पता नहीं 0.02 है या नहीं, तो मुझे पता नहीं ये कितना है। अगर इस चीज होता तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि ये 0.03 है, तो स्टील यूज हो चुका होगा, बट इट इज द स्टील इज देयर, तो स्टील वर्स के दरमियान थोड़ा फासले में स्टैंड कम होगा। अब ये शीट पे है या नहीं, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं। कितने में है, आई आल्सो डोंट नो, ये पे है या नहीं, मुझे पता नहीं। स्टील बीम के केस में क्या करते हैं, बीम के केस में हम स्टील को फोर्स करते हैं कि वो यील्ड हो जाए। हम कैसे फोर्स करते हैं, आपको याद है हमने कहा था कि बीम में जब हम रिइंफोर्समेंट डालेंगे तो अभी रिइंफोर्समेंट डालेंगे कि जो स्ट्रेन है टेंशन साइड पे वो 0.005 से ज्यादा, तो 0.005 से ज्यादा स्ट्रेन के लिए हमने एस मैक्स मालूम किया था, और 0.002, 0.003, 0.004 आर लेस देन 0.005। इसका मतलब ये कि जब स्ट्रेन 0.05 से ज्यादा है तो उसकी डालेंगे यील्ड हो सकता है, और जब हमने एस मैक्स उसके मुताबिक डाल दिया, यानी एस हम हमेशा एस मैक्स से कम डालेंगे तो हमारा स्टील हमेशा यील्ड होगा। Here we can't do this, हम ये नहीं करते। अगर आप देख लेंगे we can't do this, क्योंकि तो स्टेट ऑफ स्ट्रेस ही assumed स्टेट ऑफ स्ट्रेस है, assumed स्टेट ऑफ स्ट्रेस है, ये एक्चुअल स्टेट ऑफ स्ट्रेस नहीं assumed है। और इसमें अच्छा, अब इसमें चूंकि एफएस में आपको सिर्फ ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप इसमें एफएस1 एफएस2 डायरेक्टली यूज कर दो ये गलत, क्योंकि स्ट्रेन जो है आपको पता नहीं है कि स्ट्रेन यील्ड स्ट्रेन है या नहीं, यू डोंट नो दिस। तो आपकी इक्वेशन इस तरह लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ एफएस1 एंड एफएस2, आपके पास इक्वेशन इस तरह आ जाएगी 0.85 FC prime A times B, A is the compression block depth and B is the width of the side of the column perpendicular to this. ये इसका B है, B will be this is B, this is B and this is A। ये इसका जो एरिया है दिस एरिया इज इन कंप्रेशन, समझ गए आप। तो इसका ये जो साइज है ये A है और ये साइज इसका B है, दिस इज 0.85 सी प्राइम AB, ठीक है जी। और AS1 जो आपका CS है, CS this is in compression and this is in tension, so you will write this CS equal to AS1 FS1, ये जो मेरा कंप्रेशन में, और T नीचे जो है ये AS2 FS2 टेंशन में है। तो फाइनली you will have this equation 5.85 C prime AB plus AS FS1 minus FS2 is equal to PU or must be greater than equal to, तो 5 PM जो है ये कम से कम PU के बराबर होना चाहिए, but FS1 FS2 will yield or not I don't know, मुझे कुछ पता नहीं। FS1 तो कंप्रेशन साइड पे है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो ES1 है ना, ES1 this ES1 this 10 multiplied by E, इसने क्वेश्चन किया this 10 multiplied by E will give us FS1 and this 10 multiplied by E will give us FS2, ठीक है, समझ गए। लेकिन इस 10 हम मालूम हो तो मसला नहीं है, अगर हम सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स से मालूम करें और हम करेंगे इसका, हम सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स हम किसी S1 S2 को मालूम कर सकते हैं, तो फिर हमें S1 S2 को मालूम कर लेंगे, और S1 S2 की वैल्यू जो भी आ जाए, मतलब आई सॉरी यानी F5 से अगर ज्यादा भी आ जाए तो हम F5 इस्तेमाल करेंगे। अगर ये वैल्यू F5 से भी, क्योंकि F5 से ज्यादा तो इस्तेमाल करें अलाउड ही नहीं, तो अगर FS1 कैलकुलेशन से ज्यादा आ जाए तो हम F5 के बराबर लेंगे। तो FS1 में एक्चुअल स्ट्रेस आपका F5 से ज्यादा आएगा और हम उसको F5 लेंगे तो आपके पास C बार बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ C बार बढ़ जाएंगे आपके पास। और अगर F5 तो मतलब अगर हम ग्रेड 60 की तस्वीर इस्तेमाल कर रहे हैं, अब इस स्टेट ऑफ के मुताबिक मुझे मेरे पास FS1 100 आ तो 100 तो है नहीं, तो कैसे 100 होगा, तो मैं उसको इक्वेशन में 40 डालूंगा या 60 डालूंगा। जब उसको मैं इक्वेशन में 40 60 डालूंगा तो मेरे पास AS बढ़ जाएगा, तो टोटल मेरे पास फोर्स जो है वो AS FY के बराबर, तो AS बढ़ जाएगा, ठीक है। अभी आप देख लेंगे इसको आहिस्ता आहिस्ता
समझ जाएंगे। ये तो एक इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन मेरे पास mn से आएगा, नॉमिनल कैपेसिटी। नॉमिनल कैपेसिटी बाय टेकिंग मोमेंट अबाउट सेंट्राइड। अच्छा, अब इसमें मैं बेंडिंग मोमेंट अगर आपको याद हो, हम कपल का बेंडिंग मोमेंट ले लेते हैं, ताकि हमारे पास एक ही वैल्यू आ जाए। अगर हम सेंट्राइड के बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू बीम के केस में लेंगे ना, तो हमारे पास कंप्रेशन और टेंशन दोनों आ जाएंगे, समझ रहे हैं ना? लेकिन उसमें हमें फायदा नहीं है, क्योंकि हमने स्टील मालूम करना है टेंशन वाला। अब इधर जो है, अगर मैं ये करूंगा, अगर मैं सेंट्राइड की बजाय नीचे टेंशन पे बेंडिंग मोमेंट लूंगा, तो मेरे पास एक टर्म जीरो हो जाएगा। जबकि मुझे कंप्रेशन में भी रिइंफोर्समेंट मालूम करनी है, तो बजाय से कि मैं अपना सेंट्राइड बीम की तरह बेंडिंग मोमेंट इधर ले लूं, मैं बिल्कुल सेंट्राइड पे लूंगा, एक सेंट्राइड। तो मैं सेंट्राइड के बेंडिंग मोमेंट लूंगा, तो उससे मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? सीसी का ये डिस्टेंस जो कि इसके सेंट्राइड तक है, सेंट्राइड ऑफ द कॉलम, सेंट्राइड ऑफ द कॉलम, और सीएस का सेंट्राइड से फासला और टीसी का सेंट्राइड से फासला। तो सीसी का सेंट्राइड से फासला कितना है? इफ दिस टोटल इज a एंड दिस इज a by 2, और ये मेरे पास h by 2 है, ये h by 2 है, तो सीसी विल बी, इसका बेंडिंग मोमेंट का सीसी इनटू h by 2 minus a by 2, और cs will be equal to cs का कितना होगा? if this is g prime, अगर मेरा ये जो enforcement है ये d prime पे पड़ा हुआ है, तो ये होगा h by 2 minus d prime, और t क्या होगा? अगर d भी d prime है तो फिर t into h by 2 minus d prime, ये कैसे हो जाएगा? h by 2 minus cc h by 2 minus a by 2 plus cs is h by 2 minus d prime plus t h by 2 minus d prime, समझ रहे हैं? अब इसको फर्दर सिंपलीफाई करते हैं, तो it will be like this. Phi mn will be phi cch by 2 minus a by 2, cs is this h by 2 minus d prime। तो इसमें ये चीज हम कॉमन निकाल सकते हैं, h by 2 minus d prime, करेक्ट? h by 2 minus d prime अगर इसमें से कॉमन हम निकाल दे, और ये c जो है असल में ASFS1 है और t जो है ASFS2 है, समझ रहे हैं आप? और अगर AS1 AS2 के बराबर हो, यानी दोनों साइड पे मैंने बराबर रिइंफोर्समेंट डाला हो, तो AS1 AS2 के बराबर हो जाएगा, तो भी इसमें से कॉमन निकल आएगा। तो AS और h by 2 minus d इसमें से कॉमन निकल आएगा, और FS1 plus S2। तो दिस विल बी द सेकंड इक्वेशन। Phi mn is equal to, ये दोनों इक्वेशंस आप जरा लिख लें, ये दोनों इक्वेशन आप लिख। क्या चीज? के बराबर है, तो वो जो है एकदम हो जाएगा, हम एक डायरेक्शन ऑफ द बेंडिंग मोमेंट एग्जैक्टली होंगे। ये ग्रेविटी लोड में तो ठीक है, लेकिन आपकी लोडिंग में बिल्कुल रिवर्स हो जाता है। बिल्डिंग ऐसे मूव कर रहा है ना, ये इन साइड तो क्या है, अगर इसमें फुल एक्सियल कोई अर्थक्वेक लोड ना हो तो फिर आपके पास ठीक है, लेकिन ये इस तरह नहीं होता, और फिर इसका सेंट्राइड जो शिफ्ट हो जाएगा। अगर आप रिइंफोर्समेंट अनइक्वल डालेंगे तो सेंट्राइड शिफ्ट हो जाएगा आपके, जस्ट इन सेंट्राइड विल शिफ्ट फ्रॉम बेंडिंग में रिइंफोर्समेंट, बेंडिंग मोमेंट और एक्सियल लोड के जो रिलेटिव मैग्नीट्यूड है वो जो भी हो, फिर ऑलवेज प्लेस डिस्ट्रीब्यूटेड रिइंफोर्समेंट, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रिइंफोर्समेंट, equally distributed, ठीक है? This is equation number 1. You can also write equation number 2 like this. बस ये दोनों इक्वेशन इधर एक साइड पे हैं। ये दो इक्वेशंस जो हैं ये आप याद रखें, और नेक्स्ट क्लास से पहले जरा इस पे आप सोचें कि हाउ कैन वी डिजाइन uniaxially loaded columns using the concept of beam design। हम कैसे कर सकते हैं? बीम डिजाइन का जो कंसेप्ट है उसको इस्तेमाल करते हुए हम कैसे इस कॉलम को डिजाइन करें, और इसमें बात याद रखें FS1 और FS2 की वैल्यूज हमेशा यील्ड से कम होनी चाहिए, ठीक है? अच्छा, ये दो
हमारे पास इसमें अगर 2 लेयर्स ऑफ रिइंफोर्समेंट है, अगर हमारे पास 3 लेयर्स ऑफ रिइंफोर्समेंट हो तो फिर इक्वेशन में टर्म का हो जाएगा, इक्वेशन में टर्म का हो जाएगा। और अगर 4 लेयर्स ऑफ रिइंफोर्समेंट हो तो 2 टर्म का हो जाएगा। सर अगर थर्ड वो ये पहले ब्रिज लाइन पे उसका मूवमेंट नहीं होगा, लेकिन एक लोड में आएगा, पीएन में आएगा, पीएन में आ जाएगा और इसमें नहीं। पीएन में अगर हमारे पास इधर 2 बार्स पड़े हुए हैं और इधर हो तो ये टेंशन में होगा, ये माइनस होगा, ठीक है जी। लेकिन इसका डिस्टेंस जो है कंट्राक्ट से बिल्कुल जीरो है, तो इसका लिमिट टर्म में इजाफा नहीं होगा। अगर हमारे पास 2 रोज इधर हो, एक इधर हो 2 बार और 2 बार इधर हो, तो ये दोनों बार दोनों इसमें आ जाएंगे, लिमिट में भी आएंगे। और this term will change. This term will depend on the number of rows provided in the column. This is enough for today. Next time इंशाल्लाह फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। इस पर जरा आप सोचें कि इस कॉलम को हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ व्यू। अटेंडेंस ले ले एक प्लीज।